हेलो हेलो हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट जो कि बेस्ड है डीप लर्निंग पे। तो लेट्स लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट है क्या और फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो इट्स जस्ट लाइक कि यहाँ पे आप वट एवर द सेंटेंस और टेक्स्ट यू आर हैविंग, हेलो, हाउ आर यू डूइंग, इट विल टेक द स्टेटमेंट एंड गिव यू कि क्या सेंटिमेंट है। इट्स अ न्यूट्रल स्टेटमेंट। हाय, आई एम फीलिंग excited. Let's see इससे कुछ और रिस्पॉन्स मिलता है क्या। सो इट्स अ हैप्पी स्टेटमेंट एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी ऑन द ग्राफ की किस स्टेटमेंट का कितना इम्पैक्ट है। यहाँ पे एक और पेज है वेयर आई हैव लोडेड द एंटायर डेटा सेट फ्रॉम वेयर यू कैन हैव अ ग्लिम्स की बेस्ड अपॉन द इमोशन देयर आर 9 इमोशंस। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाउ द डेटा इज देयर एंड हाउ द इमोशन इज देयर एंड इट्स अबाउट पेज। So this is somewhat the and project is. Let's go into the code of this machine learning project. So let's start from the very start. These are the all important libraries which I have imported uh, in making the entire model. So starting with pandas and numpy and matplotlib. So these are the mandatory libraries. The RE and NLTK libraries are for working on the statements. To RE is specifically used to catch some patterns, and NLTK is used to pre-process the things. For specifically, I have used stopwords. For that, I have used NLTK, and TensorFlow and Keras are the machine this deep learning library, and this sklearn is used for train test split. As on the go, we will discuss कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज करी है। आई हैव यूज दिस थिंग क्योंकि जो मेरा डेटा है वो मेरी ड्राइव पे है। सो टू इम्पोर्ट माई डेटा फ्रॉम द ड्राइव आई हैव यूज दिस पीस ऑफ कोड। हियर आई एम लोडिंग द डेटा। दिस इज समवॉट माई डेटा इज। इसमें इमोशंस में नो लेबल्स हैं और जो टेक्स्ट है वो ऐसा दिखता है। तो द मेन एजेंडा ऑफ द एंटायर प्री प्रोसेसिंग पार्ट विल बी कि हमें इमोशंस वाला कॉलम जो हमारा वाई कॉलम रहेगा वो, और जो हमारा एक्स कॉलम रहेगा जहाँ पर टेक्स्ट रहेगा, तो हमारे एक्स कॉलम से हमें वाई कॉलम प्रिडिक्ट करना रहेगा। हमें एक नया डेटा मिलेगा, उससे हम वाई प्रिडिक्ट करेंगे। तो वी विल लुक द बिगर पिक्चर कि हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट में। पहले हम जो हमारा वाई कॉलम रहेगा इसको पूरे को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसमें टेबल एनकोडिंग कर देंगे। एज वी नो कि यार ये कैटेगोरिकल डेटा है, मशीन डोंट अंडरस्टैंड कैटेगोरिकल, तो इसे हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। एंड फॉर दिस एक्स पार्ट विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग कि इसे हम पहले टोकनाइज करेंगे। उसके पहले हम उसको प्री प्रोसेस करेंगे, इसमें से स्टॉप वर्ड्स हटाएंगे, पंक्चुएशन हटाएंगे एंड ऑल द बेसिक प्री प्रोसेसिंग थिंग वो कर लेंगे। उसके बाद हम इसको टोकनाइज करके एम्बेड करेंगे और एक स्पेशल वर्ड एम्बेडिंग यूज करेंगे। उसके बाद हर एक सेंटेंस का एक वेक्टर बनाएंगे बेस्ड ऑन द वर्ड्स और द टोकन्स इट विल है, जो हम ऑन द गो में देख लेंगे तो इट विल गिव यू मोर क्लियरिटी। ये हमारा इन्फो कॉलम रहेगा, द हाउ द डेटा इज, डेटा टाइप क्या है, कोई नल वैल्यू है क्या। तो एज यू कैन सी हमारे डेटा में कोई नल वैल्यू नहीं है, डुप्लीकेट्स हैं। देर आर ऑलमोस्ट अराउंड 16,000 डुप्लीकेट rows are there, so we'll remove the duplicate. And now this is what the distribution or the frequency of different emotions is there in our data. So see, to be very honest, this is not the idle data. तो ट्रेन अ गुड मॉडल व्हाट वी नीड इज कि हमारा जो हर कॉलम रहेगा उसमें जो वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी रहेगी, जो लेबल्स रहेंगे, इट शुड बी समवॉट अराउंड इक्वल। नहीं तो मॉडल सही से ट्रेन नहीं होगा क्योंकि उसे हर लेवल के करस्पॉन्डिंग इक्वल डेटा नहीं मिला है। तो ठीक है, लेकिन अब वी कांट डू एनीथिंग क्योंकि हमारे पास डेटा यही है। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल। ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, इस पे हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे तो प्री प्रोसेसिंग के पहले टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है और बाद में कैसे दिखता है। वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन रिमूव टैग्स। ये एचटीएमएल टैग वगैरह जो भी डेटा में रहेंगे वो रिमूव करेगा। फ्रॉम एनएलटीके वी हैव डाउनलोडेड स्टॉप वर्ड्स। Stop words are the words which generally don't have any meaning, but they are there in the sentence. For example, of, and, the.
that. So we have to remove this thing also from our data, from the sentence. And to do so, we have created a function जिसमें हम पूरा data देंगे और a single go में we will get the output. तो let's go up with the things. पहले हम सेंटेंस जो मिलेगा उसे लोअर केस में कर लेंगे. इट्स बेटर टू इंटरप्रेट द थिंग्स, क्योंकि मशीन के लिए तो अपर केस और लोअर केस अलग अलग होता है. तो इट्स बेटर टू हैव द एंटायर सेंटेंस इन लोअर केस. फिर जो हमने पहले ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था टैग, उससे टैग रिमूव कर देंगे. विद द हेल्प ऑफ आरई लाइब्रेरी हम उसमें जितने भी पंचुएशन होंगे वो हटा देंगे, क्योंकि पंचुएशन से हमारे सेंटीमेंट पे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. वी कांट हैव एनी आइडिया कि यार कौन सा सेंटेंस है. फ्रॉम क्वेश्चन मार्क और फ्रॉम फुल स्टॉप यू कांट इंटरप्रेट ना कि कैसा सेंटिमेंट है. We'll remove the character, single character, for example a, or somewhere if they have used any other single word, we'll remove spaces also. And here we are removing the stop words, and then we are returning the sentence. ओके देन. तो यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी लिस्ट डिफाइन करी और एक फंक्शन में हमारा जो भी डेटा स्ट्रक्चर से हमने सिर्फ टेक्स्ट वाला कॉलम एक्सट्रैक्ट किया, दिस कॉलम, और फिर हम हर एक लिस्ट के लिए आइटरेट करते गए और जो भी हमें रिटर्न वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, रिटर्न वैल्यू जो भी मिल रही है उसे हम x में अपेंड कर दे रहे हैं. नाउ दिस इज द आउटकम व्हाट वी विल हैव. इनिशियली वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग दिस. I feel like I have to make suffering. I feel like I have to make the suffering I am seeing mean something. And after pre-processing, as you can see, it has converted that thing into feel like make suffering seeing mean something. All that doesn't make any sense to us. But by including this thing also, machine won't interpret something. So it's better कि हमारी processing fast होगी to train the model. यहाँ पे we are done with the processing of X part. Now we have to do the processing of Y part. हमें जो भी हमारे emotions हैं, 9 emotions, we have to convert those emotions into labels so that machine can interpret the things. Then we are doing the train test split part. After doing this thing, now we are on the very important step of entire model training, that is word embedding. Now what we will do for a sentence, see we are having how many rows? We are having around this 2,22,000 rows. Now this rows, each row will have a statement, so we are having a lot of sentences. It's very difficult to deal with such sentences. So what we will do, we will have a corpus of words which will have 1 lakh unique words. Now for each sentence we will tokenize the sentence, and then based on the unique words which we are having, we will create a vector of that sentence. So we are doing such. Now we will check whatever the vocabulary length we are having. So we are having 73,000 unique words in a sentence. Now in this model we are using a sequential model, and the problem with sequential model is that we need a fixed input of fixed size. So now whenever the user will give the input or the dataset we are having, each input is having a different length, as we can see from here. See, it is having a different input length, it is having a different input length. But as a model will going to take fixed input length, the sequential, it is a property of sequential model, it used to take fixed size of input. So what we're going to do, we will make the input size fixed, that is of max length 100. And if the input is having less than of that much of input, then we will do padding, and padding will be done after the sentence. We will do post padding. Now in this we are using a special word embedding technique, that is glue word embedding technique, where we will define the vector in such a way that it is a predefined technique. So we will use this word embedding technique to get a better result. I will provide this data in the description of this code. So after this, now this is the most important part. यहाँ पे हम हमारा मॉडल ट्रेन करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, हम LSTM मॉडल यूज कर रहे हैं, बिकॉज एज हमारे पास जो सेंटेंस रहेगा इसमें हमें सेंटेंस का सिंटेक्स मीनिंग जो है, स्पेशल रिलेशन है, वो कैप्चर करके रखना है. तो हम RNN से बेटर है LSTM यूज करना है. I mean LSTM we are using this embedding words, this vector. So this is the input size,
दिस इज what लेंथ वी आर यूजिंग एंड व्हाट आर द वेट्स ऑफ दिस एम्बेडिंग। जो हमने स्पेशल टेक्निक यूज करी, तो यहाँ पे जो हमने वेक्टर बनाया था, वी हैव यूज्ड दिस थिंग ओवर हियर, इनपुट लेंथ और ट्रेनेबल पैरामीटर्स इक्वल्स टू ट्रू है। जो हमने पैरामीटर्स यहाँ पे यूज किए हैं वो हमने ट्रू सेट करके रखे हैं। इसमें हमने स्पेशल केस यूज किया है दिस टेक्निक्स ड्रॉप आउट और बैच नॉर्मलाइजेशन टू रिड्यूस द ओवरफिटिंग। तो हमने 0.2 का ड्रॉप आउट यूज किया और बैच नॉर्मलाइजेशन यूज किया। इन द लास्ट लेयर वी हैव यूज्ड सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन एक्टिवेशन फंक्शन एंड 10 न्यूरॉन यूज किए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमारा जो लेबल है उसके 10 आउटपुट्स पॉसिबल है, एंड व्हेनेवर वी आर हैविंग आउटपुट मोर देन 2 वी यूज टू हैव एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टवेयर, नहीं तो सिग्मॉइड यूज करते हैं। हमारे जो लर्निंग रेट है वो हमने काफी कम रख रखा है, ऑप्टिमाइजर हमारा एडम है। लॉस फंक्शन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस ओवर हियर, वो हमने यूज किया स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। क्योंकि अब हमारा जो हर सेंटेंस है उसके लिए जो हमारा वेक्टर बनेगा उसमें काफी बार पैडिंग होगी, काफी बार जीरो वैल्यूज रहेंगी वेक्टर में, एंड व्हेनेवर वी आर हैविंग सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स और डेटा वी यूज स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। तो दिस इज द समरी ऑफ आवर मॉडल। इसमें हमारे पास टोटल trainable parameters are there which are 7 lakh, नहीं it's हाँ 75 lakh, it's 7 lakh 57,000, sorry, and non-trainable is 896. Right now the model is getting trained and we got somewhere accuracy of 45%. Soon we will evaluate the model here and we will plot it with the help of plotly. After this, we will use pickle library to dump the model. This LSTM model, we will dump it. Now, what we will do, जैसे ही हमने मॉडल डंप किया, अब हम इसका एक फ्रंट एंड तैयार करेंगे। द फ्रंट एंड विल बी गेट प्रोग्राम्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलिट। अब हम स्ट्रीमलिट कर, हमने सिंपली सिर्फ स्ट्रीमलिट और पैंडास और नंपा यूज किया है, और प्लॉटली और जॉब एलआईबी यूज किया है। जॉब एलआईबी और प्लॉटली सिर्फ हमारा ये जो ग्राफ है सिर्फ इसी के लिए यूज किया है, जॉब एलआईबी और प्लॉटली। अपार्ट फ्रॉम इट हमने हमारा मॉडल एज इट यूज किया है। स्ट्रीमलिट हैविंग अ वेरी मिनिमलिस्टिक कोडिंग, सिर्फ हमने यहाँ पे हमारा मॉडल पिक्सल से लोड किया और उसको एज इट इज यूज कर लिया। तो दिस इज द कोड फॉर द फ्रंट एंड पार्ट विच इज वेरी इजी। द मेन पार्ट इज द बैक एंड पार्ट। सो द मॉडल राइट नाउ अभी ट्रेन हो रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम। रिमेंबर कि जब भी मॉडल ट्रेन करो तो यूज दिस जीपीयू पार्ट फॉर फास्टर ट्रेनिंग, फॉर मशीन लर्निंग पार्ट। थैंक यू।